Hello everyone, welcome back to my Python programming series. In the today lecture, we will discuss about Python Unit 5 in the one shot. In the Unit 5 of Python, in which we will study about OOPS. What do you understand by OOPS? In this lecture, we will cover some topics like introduction of loops, classes, object, attribute, and types of OOPS concept. Let's discuss about introduction of OOPS. The definition of OOPS is a style that organize code around objects. मतलब कि ओवरऑल OOPS हमारा ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है. सिंपल वर्ड में समझाता हूँ. अभी तक हम वेरिएबल्स फंक्शंस पढ़ लेते हैं, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स, हाउ टू क्रिएट फंक्शन. बट जब हमारा कोड मतलब कि जब हमारा प्रोग्राम एक बड़ा हो जाता है और उसका कोड एक डिफिकल्ट फॉर्म क्रिएट कर लेता है, जब भी हमारा कॉन्सेप्ट आता है ऊप्स का टू हैंडल दिस कोड. सिंपल वर्ड में एक रियल लाइफ एग्जांपल इज इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम हमारा वेरिएबल्स और फंक्शन से नहीं चल सकता. वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको रोज मतलब कि डेली लाइफ में मैनेज करने के लिए हमें ऊप्स का कॉन्सेप्ट लाना मतलब ऊप्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है. OOPS is a programming style that organizes code around objects. It's all about objects, how to create object, how to create class, unit combining data attributes and behavior like method instead of separate variable and functions. जैसे कि ये हमारा एक कार का एग्जांपल है. यहाँ पर हमारे जो ये ब्रांड है और जो कार का कलर है, मतलब कार इज माई ऑब्जेक्ट. ये कार हमारी एक ऑब्जेक्ट है, पर जो उसका डाटा है, जो हमारा उसका एट्रीब्यूट है इस ब्रांड और कलर, और जो उसका बिहेवियर है मीन्स कार का मेथड, हाउ मतलब कैसे कार चल रही है, कैसे कार स्टॉप हो रही है, ये हमारे मेथड है. बिहेवियर्स, स्टार्ट एंड स्टॉप, एग्जैक्टली हाउ ऊप्स मॉडल थिंग्स, यही हमारा एक ऊप्स का कॉन्सेप्ट है. मतलब कि उसका जो जैसे कि हमारे पास एक कार है, जैसे कि ये एग्जांपल में समझा, एक कार हमारा ऑब्जेक्ट है. कार का जो डाटा है उसका कलर, उसका ब्रांड और उसका हैंडल्स, उसके टायर्स इज माई ऑल अबाउट डाटास लाइक एट्रीब्यूट. बट कार का बिहेवियर, उसमें ब्रेक कैसे लग रहे हैं, वो कैसे स्टॉप हो रही है, वो कैसे स्टार्ट हो रही है, ये हमारे एक मेथड होते हैं. Key points of OOPS are: OOPS means short form of OOPS is object oriented programming. Four pillars of OOPS is encapsulation, inheritance, polymorphism, and abstraction. In the Python, we have multiple threading. Language supports OOPS plus procedural. Forces on OOPS, not just functions. Makes code reusable, organized, and closer to real life. This is the examples of OOPS, मतलब key points, in which OOPS real life entities as object with data plus behaviors. मतलब कि OOPS is all about the combining data and behaviors of the object. Let's discuss about this example. Class. Class is to create the class. Class is my class name and then pass. In the previous lecture, we will discuss about this keyword pass. Pass is nothing. It nothing do. It's only pass your argument. Nothing will be happened or pass. In the first line defines a new class named student. In the second line pass empty class body for now, and in four line create an object as one from this class and print the object memory friends. ये हमारा सिंटेक्स होता है oops का. ये हमारा कोड है.
Now discuss about classes. Classes क्या है? Classes is a blueprint or template to create a object. सिंपल वर्ड में समझाता हूँ, जैसे कि एक कार है। कार का जो हमारा ब्लूप्रिंट है वो हमारा एक क्लास है, बट जो एक्चुअल हाउस है हमारा, जो बनने जा रहा है एक्चुअल हाउस, वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है। यही क्लासेस होती हैं। Classes is a blueprint and template used to create object. It defines what data and behaviors the object will have. Like this example. In the previous we will discuss about this car example. A building blueprint is a class. मतलब जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट एक हमारा क्लास है, बट जो हमारी एक्चुअल बिल्डिंग है, जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है। मतलब कि जैसे कि एक घर है, घर का नक्शा जो बनाते हैं वो हमारा एक ब्लूप्रिंट है कि वो कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा, वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है। मतलब कि एक क्लास है, बट जो हमारा एक्चुअल घर बनेगा, जो एक्चुअल घर है हमारा, वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है। की पॉइंट्स आर डिफाइंड यूजिंग द क्लास कीवर्ड। मतलब क्लास हम क्लास से क्रिएट करते हैं, क्लास कीवर्ड होता है। C is small, not capital. Does not occupy memory from object data and can contain attributes like variables and methods functions. Naming convention as Pascal case student.car and one class many object possible. एक कार के अंदर हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लाइक ब्लूप्रिंट तो हम सब घर का भी बना सकते हैं, पर घर तो हम एक ही बना रहे हैं ना, एक्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब ब्लूप्रिंट हमारे पास बहुत सारे हैं, पर घर तो एक ही बन रहा है ना, तो उसको ही हम जो एक्चुअल घर है, मतलब जो एक्चुअल चीजें बन रही, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। लाइक वन क्लास हैविंग मैनी ऑब्जेक्ट पॉसिबल। एक क्लास के अंदर हम मैनी ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लासेस इज ए लोकल, मतलब जो लॉजिकल एंटिटी होती है, एंड डज नॉट कंज्यूम मेमोरी अंटिल अ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, जब तक क्लास में कोई भी मेमोरी स्टोर नहीं होती। और क्लासेस हमारा एक लॉजिकल एंटिटी होता है, एंड oops हमारा एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। This is the syntax of how to create the class. Class keyword like and class name. Class name is my method attribute. नहीं, class is my class name. This is in the code class. In the first line, we will define the class name like as car, and in the second line, we will have the attribute wheels equal to 4. It shares all the car. Wheels is a class attribute shared by all cars. And in the third line, we will access directly using class name dot attribute. Let discuss about this. In the previous, we will discuss about the OOPS. OOPS is a programming style that organizes code around objects and unit combining data like attributes and behaviors like method. This is the syntax of the OOPS, and also the class. In the class, we will discuss about class is a blueprint and the template to create the object. And this is the syntax of the class. Real world examples is a building blueprint is a class and actual building constructor form as object. Let open another folder. Select
Let's take this example. अब इसको रन करते हैं, तो ये इसका आउटपुट होगा हमारा 4 because we create keyword like class and this is my class name and wheels is my attribute. In the access we print here class dot wheels. चलो अब समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। सिंपल वर्ड में ऑब्जेक्ट है एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज, जो रियल वर्ल्ड उसको हम रियल वर्ल्ड इंस्टेंस ऑफ अ क्लास भी बोल सकते हैं, बिकॉज जब हम क्लास बनाते हैं और उसमें जब ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वही हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। लाइक ऑब्जेक्ट इज अ रियल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास created in a memory which own actual data। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर हम डाटा भी डाल सकते हैं, उसका खुद का एक्चुअल डाटा, ना कि एक ब्लूप्रिंट। बट क्लास में एक क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कार का जो हमारा डिज़ाइन है, जो उसका ब्लूप्रिंट है वो हमारा क्लास है। बट जो हमारी एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कार हमारी एक BMW हो गई, एक टेल्सा हो गई, वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है। रियल वर्ल्ड एंटिटीज वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। रियल लाइफ एग्जांपल इज एवरी एक्चुअल कार ऑन द रोड, योर कार माई कार इज एन ऑब्जेक्ट। बट कार का जो क्लास है, जो उसकी कार की डिजाइनिंग करी गई है, जो उसका ब्लूप्रिंट है, जो उसका टेम्पलेट है, वो क्लास होती है। और ऑब्जेक्ट इज अ एक्चुअल डाटास like real world entities like me and cars objects and bed, like that it's a object created using class name and parenthesis। ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट होता है, क्लास नेम देन parenthesis। ईच ऑब्जेक्ट हैज इंडिपेंडेंट डाटा, मतलब कि उसका खुद का डाटा होता है। लाइक हमारी क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि मैं हूँ, अमन है, अंकित है, मेहता है। तो उन सब का खुद का डाटा होगा, ना कि मेरा डाटा होगा। यही हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। लाइक दे आर इंडिपेंडेंट डाटा, खुद का डाटा, ना कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। उनका खुद का ओन डाटा रहेगा क्लास के अंदर। एंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वन क्लास। जैसे कि हमने बोला क्लास, क्लास क्या है, क्लास हमारी एक ब्लूप्रिंट है। क्लास के अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी एक क्लासरूम होती है, तो क्लासरूम हमारा एक ब्लूप्रिंट है। जो क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैं, अमन, अंकित, मेहता एंड सम अदर्स स्टूडेंट, तो वो सब एक ऑब्जेक्ट है। और उन ऑब्जेक्ट मीन्स उनका खुद का ओन एक्चुअल डाटा होता है, और रियल वर्ल्ड एंटिटीज वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंस। लाइक इंस्टेंस मीन्स टू क्रिएट द क्लास इन द ऑब्जेक्ट, मतलब क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। लाइक द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास, वही हमारे इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस इज ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट and access using the dot operator, and also we access using the dot operators in the object। Let's explain the syntax. This is the object underscore name equal to class name parenthesis. This is the syntax. And like we have class name is car, then after we define init functions, and there is self is like default, we use self here, and brand, and self dot brand equal to brand, c1 equal to car Toyota, then car2 is my Honda, then print this। Let copy this code and execute in the
VS Code. Let's see the output. Toyota and Honda. This is the multiple objects to create in the class. In the first line, create class with a brand attribute. ये क्लास है, एक क्लास नेम है, ये हमारा एट्रीब्यूट है विद क्लास एंड टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, ये हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं और उसको हम इंडिपेंडेंट प्रिंट करवा रहे हैं, यही हमारा ऑब्जेक्ट होता है. Let's do some questions like how to how मतलब what is the syntax of the class. Let discuss about the syntax of object first. Syntax जैसे कि हमारे पास की क्लास है और क्लास का नेम है स्टूडेंट, देन उसको पास कर देते हैं सिंपली कि अभी हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो सिंपली हम इसे पास कर देंगे. बट पास आर्ग्यूमेंट इन द प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दिस कीवर्ड पास. पास डू नथिंग, इट्स ओनली रीड दिस एंड आफ्टर skip to the next line, that is the pass. Then we create the student, s1 equal to student. This is the object to create the students. Let's discuss this. See this. This is my class. तो class name and then s1, मतलब कि जो ये हमारा s है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट. इसके अंदर हम अपना खुद का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो ये ऑब्जेक्ट है. चाहे हम यहाँ पर s2 लिखते हैं स्टूडेंट. अभी इसके अंदर हमने कोई डाटा स्टोर नहीं करा है. देखो ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं, ये वही है. सी now we will creating the object like multiple object like s3 equal to student. That is how to create the multiple object. अब हमने अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं. ये multiple object, how we will create this. This is the syntax of multiple object to create in the class. That discuss about now we will discuss about object entity. Let create the class student, then pass this, then after creating the object, multiple object student. This is the syntax of to create the object. Then after we will identify the identity of the object, which we use here id method to identify the identity. Now terminate this code. See now discuss about attribute. In the simple world we will explain you what is a attribute. एट्रीब्यूट वो होते हैं जो क्लास और ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. लाइक इन द डेफिनेशन एट्रीब्यूट्स आर वेरिएबल्स that belongs to the class or object and store its data and state. वही मीनिंग है, वो वेरिएबल्स होते हैं एट्रीब्यूट जो हमारी क्लास और ऑब्जेक्ट के
इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ डाटा। लाइक दिस इज द एग्जांपल स्टूडेंट नेम। अगर हमारे पास स्टूडेंट के अलग अलग नेम स्टोर करने हैं एज अ यूनिक वैल्यू, सो दिस इज द स्टैंड एट्रीब्यूट। Attribute are two types: instance attributes and class attribute. Instances attribute are that those have unique value, and class attributes are the same student name, like students, like multiple students belong to the LPU university, so this is the class attribute because we assigning the students as a form of LPU because all students belongs to the LPU. That is the class attribute. And instance attribute are the unique name to specify the someone, like we have the multiple student, so the student names are unique because every student carry own identity, not different identities. So that is the attribute to store the informations. And class matlab it's also belong to the class. That take this example attribute. Now we will here write class to create the class student. Then after pass the, then s1 is let create this s1 to belong to student class name, and assigning the value s1 dot name is equal to Raman. Then s1 dot age is equal to is equal to 20. Then s1 dot branch is CSC. Then print s1 dot name and print s1 dot age. Print s1 dot branch. We here dot to access the data. That is the use of the dot here. In the previous we will discuss the in the object we will discuss the dot, why we use dot. Dot is used for access the data. And then this is this is my output Raman 20 and CSC. This is how to create the attributes data to store the data. जो ये हमारी नेम है ना, ये हमारा एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट। जो ये एज है ना, ये एज हमारी एज एट्रीब्यूट है। और जो ब्रांच है ना, ये हमारे ब्रांच एट्रीब्यूट है। लेट टेक सम डिफरेंट एग्जांपल। लेट क्रिएट कार means creating the car class name. Then here write c equal to car loans. Then after name is Elsa. Then c dot is the attribute of the car name attribute. Then after price attribute is 250. Then print here c dot name class name attribute car name attribute, then car price attribute print. Then print here that is the class name matlab car name attribute, then class price attribute. This is the example of attribute to assign the value. Now we will discuss here key points.
Key points are two types. In the previous we will discuss about attributes are two types. Instance attribute that have unique identity like student. Student name have मतलब स्टूडेंट जो है उनकी खुद की आइडेंटिटी होती है। एक स्टूडेंट के पास एक ही नाम होगा उसका खुद का, जिससे वो आइडेंटिफाई करता होगा खुद को, और दूसरे स्टूडेंट के पास खुद का उसका ओन नेम होगा। लाइक हेयर creating instance attribute. If we write here class student pass that, then after s1 equal to student that's belong to the class means class name, and s2 is equal to student also. Then after assigning the student dot name is equal to Raman, then s2 dot name is equal to Rajat. Then print here s1 dot name and print here s2 dot name. This is the example of instant attribute. See, Raman Rajat. This is the attribute of instance have unique identity. Let's discuss about class attribute. Class attributes are belong to the class that have similar value means जैसे कि स्टूडेंट मतलब एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं पर उन सबकी आइडेंटिटी तो जो है वो बिलोंग्स तो करते हैं एलपी से। सो इफ वी हैव मल्टीपल स्टूडेंट and only belong to the LPO. So we will use here class attribute. Instance attribute is defining using self dot attribute underscore name. Class attribute is defined directly inside the class body and vice then can be modified after object creations. This is the attribute that we have this example. This is the syntax of attribute. Let take this example. This is my example. We creating class and class name is my student. Then after we assigning here school equal to ABC school. Then after def init self comma name is also similar like to the instance in the previous question. We will here write in the form of s1 dot name. It's also like similar. In the outside we will here assigning like globally. Then after we use here s1 dot name and s1 dot school and terminate this code. Aman is belong to the ABC school. That is the output. Like school sealed by all student, that is the class attribute, and name is unique to each instance. This is the instance attribute. So both attribute type assigning the same way. So in this example it take instance attribute. This is the instance matlab this is the instance attribute s1 equal to student Aman. This is the instance attribute, but this is the class attribute, and print here both. Now we will discuss about self variable. self variable क्या होता है? self variable रिफर करता है करंट ऑब्जेक्ट को। लाइक जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या एट्रीब्यूट या उसका मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम सेल्फ का यूज करते हैं। लाइक सेल्फ इज रिफर टू द करंट ऑब्जेक्ट
and method access to the object own attribute like जैसे कि मैंने यहाँ पर self dot name लिखा इक्वल टू राज लिखा, तो वो जो सेल्फ है ना वो राज को रिफर करेगा। अगर मैं यहाँ पर s2 डॉट नेम इक्वल टू अमन लिख देता तो वो अमन को रिफर करता। यही हमारा सेल्फ होता है। सेल्फ इज मतलब सेल्फ वो होता है जो किसी एट्रीब्यूट और मेथड को रिफर करता है। लाइक एक्सेस करना चाहते हो तो हम सेल्फ का यूज करते हैं। लाइक key points we have must be first parameter of every instance method and not a keyword. It is not a keyword, it a strong convention and automatically passed by Python when calling object dot method. Then after used to set and get on the object own attribute, मतलब get हम वहां पर यूज करते हैं जब हमें अपनी डाटा को एक्सेस करना, मतलब डाटा को लेना होता है। मतलब कि सेल्फ वही है जब हम किसी भी डाटा मतलब कोई भी एट्रीब्यूट हमने बनाया और उसमें डाटा अपना स्टोर कर रहे हैं, उसको रिफर करने के लिए हम सेल्फ का यूज करते हैं। लाइक यू से माई नेम एंड माई रिफर टू योर सेल्फ। सेल्फ वर्क्स ऑन द सेम वे ऑन द ऑब्जेक्ट, इट इज द सेल्फ। लेट टेक दिस एग्जांपल। चलो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक क्लास मैंने क्रिएट करी स्टूडेंट, देन उसके बाद मैं एक डिफाइन कर रहा हूँ अपने सेट डाटा को जो कि हमारा सेल्फ है, और उसमें हम सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम लेंगे। देन सेल्फ डॉट, यहाँ पर हमारा सेल्फ डॉट नेम ही आएगा। यहाँ पर एज लेते हैं, ये एज को रिफर करेगा, एज। और यहाँ पर हमें अपनी नेम और एज को भी लिखना होगा। देन वी विल राइट हेयर डेफ डिस्प्ले, देन सेल्फ, then print here self dot name, then print here self dot age. Then we will here write the object s1 is belong to this class name. Then after s1 dot set the data, we will use here the keyword of set data Raj, 20. Then after s1 dot display to call the function, then print here, then is Raj and 20. This is the self method. Let discuss. Now we will discuss here multiple object example. Multiple object example. Let create the class student, and def here set name is equal to self dot name, and self dot name is equal to name, then display self display self dot self print self dot name, then s1 is equal to student, getting the object s2 is equal to student, then
S1 is set the name Rajat. S2 dot get set name Priyank. Then display here S1 dot display, then S2 dot display. This is the example of multiple object. See Rajat Priyank. Now we will discuss here some examples of self in this PPT. This is the syntax of self variable. We take this example in the VS Code and go through for this example. In the previous example, we creating this class name is student. Then define the set name to store the data in the name attribute. Then print here to access the data, print here self.name. And then this is multiple